High in the Himalayas, life has always followed the rhythm of nature. Snowfall decides the seasons, springs decide the routes, and water decides survival. But today, that rhythm is changing. Across the mountains of Jammu and Kashmir and Ladakh, climate change and rapid development have been changing how communities live, work, and sustain themselves. Welcome to the 16th episode of Rooting for the Grassroots. In this episode, we travel to the high-altitude landscapes of the north, where our climate champions under the National Youth Climate Consortium are working alongside communities to protect fragile ecosystems and livelihoods on the front lines of climate change. In Jammu and Kashmir, pastoralism has been the backbone of mountain livelihoods for generations. Today, nearly 7 lakh people still depend on herding and seasonal migration across the region's alpine landscapes. For these pastoral families, water is life. Nearly 100% of transhuman households rely on natural springs and open water sources for drinking water and livestock during their migrations. But over the past 2 decades, drying springs, erratic snowfall, drought, and rising temperatures have begun to disrupt this delicate system. These climate pressures have already contributed to a nearly 40% decline in pastoralism, putting both livelihoods and traditional ways of life at risk. Further north in Ladakh, another silent challenge is unfolding beneath the surface. As the region modernizes, flush toilets, borewells, and soak pits are rapidly replacing Ladakh's traditional dry sanitation systems. While convenient, these systems allow untreated wastewater to seep directly into the ground. In a fragile, high-altitude environment where groundwater systems are limited and recharge depends on precipitation, this shift poses serious risks to water quality, public health, and ecosystem stability. With only a few locally adapted alternatives available, the challenge of managing water and sanitation sustainably is becoming increasingly urgent for Ladakh's communities. And yet, from these very front lines, changemakers are stepping forward, working with communities, traditions, and local knowledge to confront these growing challenges. Let's now hear from our climate champions who are taking action on ground. હું NYCC को चैंपियन है जम्मू कश्मीर तो। हेलो, मेरा नाम शाहिद सलीम है। मैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ कश्मीर के। तो मैं नोमैडिक ट्राइब जो है गुज्जर एंड बकरवाल उससे बिलोंग करता हूँ। अभी जब हम फील्ड में देखते हैं, अभी जो माइग्रेशन हो रही है उसमें एक चीज़ चेंज हो रही है, वो पानी की अवेलेबिलिटी। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे स्टक किया। फिर उसके बाद हमने कुछ सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू किया, जैसे कि एक सॉल्यूशन जो था क्लाइमेट वाटर सिक्योरिटी के लिए अल्पाइन पॉन्ड सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये एक रेन हार्वेस्टिंग करके पॉन्ड है। जस्ट 1 साल पहले हमने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी रजिस्टर की, जो कलेक्शन ऑफ यूथ है, हमने मिलके फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसका यही है कि कैसे पेस्टोरलिज्म को सस्टेन किया जाए, कैसे पेस्टोरलिज्म को उसके क्लाइमेट इम्पैक्ट्स जो उसको मिटिगेट किया जाए। हमारा ये अब पेस्टोरलिज्म जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी अभी कल्चर है, ये हमारा ये लाइफस्टाइल है। तो इसको कैसे बचाया जाए, तो यूथ इंगेजमेंट इन द पेस्टोरलिज्म ये बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो मॉडर्न इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल जो भी ये है और इनपुट है, वो उसके साथ पेस्टोरलिज्म को इंटीग्रेट कर पाएँ। जो हमारे सोर्सेज हैं बहुत सारे, हम उसको उसके साथ जोड़ पाएँ पेस्टोरलिज्म के साथ। पेस्टोरलिज्म जो है वो मूवमेंट जो है वो 2 चीज़ों पे होती है, एक तो पानी की अवेलेबिलिटी और दूसरी ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड तो वही है, बट पानी जो है वो उसकी चेंज से जो पैटर्न थे, जो रास्ते थे, वो बदल गए। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एज ए इनिशिएटिव लेके हमने इस पे फुली प्लान तरीके से काम करना स्टार्ट किया। और जो सोल्यूशन हम ला रहे हैं ये भी कम्युनिटी का ही डेवलप्ड है, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है और जो इन्फॉर्मेशन विद इन कम्युनिटी है वो भी शेयर नहीं हो सकी है। हमने इसी को एज ए इनिशिएटिव लेके बढ़ाना चाहा, इसकी विजिबिलिटी लानी चाहिए और इसको रेप्लिकेट करना चाहा। और हमने जो है ऐसे ही पॉन्ड बनाना शुरू किया, क्योंकि देखो पेस्टोरलिज्म जो है वो बेयर मिनिमम एसेंशियल्स के साथ चलता है। तो वहाँ पे अगर स्प्रिंग ड्राई हो जाता है तो वो कंपेल करता है कि आपको प्रोफेशन छोड़ देना है। सोल्यूशन ये है कि हम एक पॉन्ड बनाते हैं, उसमें कोई भी कंक्रीट वगैरह नहीं हो जाए, नेचुरल सेटिंग में हम पॉन्ड एक बनाते हैं। और पॉन्ड को बनाने के लिए हम साइट सिलेक्शन के लिए कम्युनिटी की ही गाइडेंस लेते हैं, उनकी ही अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। वो पॉन्ड जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि एटलीस्ट 30 दिन का जो है
वो पानी स्टोर कर पाए और वो 10 मिनट की बारिश से भी भर जाए। 나 라닥시 숍네 NYCC Climate Championship인 줄레. I'm Mipam from Ladakh, and I'm associated with NGO called Zero Waste Ladakh. And since 2021, we have been working with the community, addressing issues in waste management and other environmental issues. The climate issues have become real, and it's quite visible in Leh, especially. Though it's quite visible there on ground, but because of all these distractions, I would say the youth are not really focused on these things. That's why I think youth should be directed towards working on climate issues and environmental protection. So through NYCC, I propose working on the groundwater pollution situation in Leh. Leh has the worst quality of groundwater. So I want to focus on controlling the pollution which contaminates the groundwater. So through this, I want to develop a solution for converting the soak pits which are responsible for groundwater contamination and convert them into septic tanks and divert the wastewater to the sewage treatment plant, or have natural treatment system on site there. So this way we can secure the water issues in future. And now, in the cold deserts of Ladakh, our climate champion Mipam is challenging a crisis that lies hidden beneath the surface. Through on-ground interventions, he has designed a soak pit retrofitting model using HDPE liners ready to be piloted so that it can eventually reach communities across villages and nomadic settlements to bring long overlooked groundwater contamination into public focus. What started as a simple idea is now shaping into a scalable solution. Meanwhile, in the alpine pastures of Jammu and Kashmir, Shahid is turning traditional wisdom into climate resilience. By engaging more than 100 community members, including 90 pastoral youths, he created a climate-resilient alpine water pond capable of sustaining livestock and livelihoods for up to 30 days during dry spells. Shahid is now working to scale these systems, strengthen youth-led stewardships, and ensure pastoral communities are not just surviving climate change but shaping their response to it. मैं इस प्लेटफॉर्म को एज ए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ जो हमारी वॉइसेस को एम्पलीफाई करेगा। हमारी जो आवाज़ें हैं, जो आवाज़ें नहीं सुनी जा रही हैं, उनको ऐसी जगह, ऐसे इंस्टीट्यूशंस सुनेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। So as a climate champion through NYCC, I would like to learn from other champions in terms of how to approach the different climate issues. Follow along on such stories of resilience and climate action happening across India. Be sure to like, share and subscribe to our channel and explore more resources linked below. We are rooting for the grassroots. Are you?